Start. Okay. Now, good morning, students. How are you? May I hope you all are fine. So let's start. Now, please attend your live class, class 5 students. Okay. Now, dear students, today we are going to read chapter 20. Title of this chapter is United Nations. Now, these are some few topics we will read in this chapter. Now, first is what is United Nations? Why was it formed? Aims and objectives, various programs. So, these few topics we will read in this chapter. Now, let's start. Now, the United Nations is an international organization formed to promote international peace and cooperation. It was formed in 1945 with 50 members. At present, 193 countries are the members of the UN. UN, the full form of UN means United Nations. The full form of UN. UN means United Nations. This is the full form of UN. Okay. Now, what is United Nations? What is United Nations? Dear student, United Nations is an organization. It is an organization. It is an international organization, not only an organization. It is an international organization and it is founded. It is established in 1945 after the Second World War. When the Second World War is over, after then this organization is established or this organization is founded. Means it is founded in 1945. But what is the reason why this organization is founded? Because to promote the international peace and cooperate. International peace and cooperation. To promote the international peace and cooperation in all over the world. So, this organization is established. So, this organization, it is an international organization. It is established in 1945 after the Second World War. But when this organization is established, on that time, only 50 countries are the member. Only 50 countries are the member of this organization. But in the present time, 193 countries are the members of this organization. But when it is established, means in 1945, on that time, 24 October 1945, United Nations, it is organized, it is established, founded in 24 October 1945. On 24 October 1945, it is founded, and on that time, when it is founded, it is established. On that time, only 50 members. Only 50 members. Members means 50 members. 50 countries are the members of this organization. Countries are the members. But now, in the present time, means in 2020. There are 193 members. But now in this time, present time, 193 members. 193 countries are the members of this international organization. And why it was established? Why this organization is founded? Why this organization is formed? Because to promote the international peace and cooperation. International peace and cooperation in all over the world. So, this international organization is formed. UN का मीन्स होता है, UN का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उस टाइम हुई थी. क्यों हुई थी? To promote the international peace and cooperation in all over the world. This is the main reason. So, this organization is established.
इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। और जब ये स्थापित हुई थी, जब ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उस टाइम खाली जो 50 देश, जो 50 कंट्रीज थे वो इसके मेंबर्स बने थे। लेकिन आज के समय में मीन्स इन 2020 द प्रेजेंट टाइम, आज जो है 193 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। ओके, now this first world war 1914 to 1918 and the second world war 1913 to 1945 have caused heavy destruction all over the world. Millions of people had lost their lives, millions had become homeless or had lost their dear ones. Economics of many countries was shattered and it brought misery to the mankind. The two world war made the people realize that war is no solution in any problem. Wars can only bring misery and suffering. The huge sums of money wasted on war should be utilized for the benefit of mankind. At this juncture, some countries felt need for a world organization to stop such wars in future. These people-loving countries get together to form the United Nations Organization, UNO. First World War is held in 1914 to 1918. 1940 to 1918, in this period, First World War is held. And in 1939 to 1945, Second World War is held. In 1940 to 1918, First World War is held, and 1949 to 1945, Second World War is held. This is the period of Second World War. 1940 to 1945 is the period of Second World War, and 1940 to 1918 is the period of First World War. But after the World War, people suffer from many types of problem. They can suffer from the many different type of problem. They can face many different types of problem. This type of problem, millions of people lost their life. Millions of people lost their life. They also lost their home. They become homeless. You can say that people also become homeless. They lost their home, lost their lives, lost their dear ones. So these type of problem is faced by the people in all over the country. And after the World War, people also realized that when the people face these type of problem, after they can realize that the war is not the solution of any kind of problem. War is not the solution of any kind of problem. So some countries they need for a world organization. So some countries they need some organization to stop these type of war in future. And these type of countries are a peace living country. They realize that in the future people cannot suffer for these type of problem. It means these type of war. So they need an organization, and then they got together and they formed this international organization. It is known as United Nations Organization, UNO, United Nations Organization. Now United Nations Organization, what is the aim? Its aim is international peace and security, friendly relation among nations and promoting social progress, better living standard and human rights. This is the main aim, or you can say the main objective of these organizations. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। 1939 से 1945 का पीरियड जो होता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। वर्ल्ड वॉर होने से बहुत नुकसान होता है। वर्ल्ड वॉर हुआ, लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। किस तरह की समस्या? लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए, घर बर्बाद हो गए, लोग बेघर हो गए, लोगों का घर बर्बाद हो गया, बेरोजगार हो गए लोग,
इसके अलावा लोगों के अपने प्रिय, जो उनके अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, मतलब अपने उनके जितने भी जान पहचान वाले थे, वो लोग इस युद्ध में मारे गए। तो मतलब कई तरह के नुकसान हुए इस युद्ध के कारण। लोगों को कई तरह के प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, कई प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़े थे। इकोनॉमिक, बहुत सी आर्थिक व्यवस्था कई देशों की एकदम नीचे हो गई थी, आमदनी के साधन खत्म हो गए थे युद्ध होने के कारण। तो इस युद्ध के बाद से बहुत से ऐसे देश थे जो शांति प्रिय वाले थे, उन लोगों ने ऐसा महसूस किया इस युद्ध के बाद कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता है, युद्ध से कोई फायदा नहीं, युद्ध से आदमी को नुकसान ही होता है, युद्ध होने से कोई फायदा नहीं है। युद्ध होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, घर नुकसान होंगे, अपने प्रिय लोगों को आदमी इस युद्ध में खो देगा, वो मारे जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो डाउन हो जाती है, आर्थिक व्यवस्था हमारी गिर जाती है। तो बहुत तरह तरह की, अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना जो है आदमी को युद्ध के बाद करना पड़ता है। तो कई जो देश प्रेमी, आप कह सकते हो, जो भी शांति प्रिय लोग देश थे, उन्होंने ऐसा रियलाइज किया, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि हमें कुछ एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए, एक ऐसी हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे भविष्य में, इन फ्यूचर में इस तरह के युद्ध का सामना किसी को ना करना पड़े। तो इसीलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम रखा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी उन्होंने स्थापना की। द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड The United Nations was established on 24 October 1945 in San Francisco. India was one of the first 50 nations who signed the UN Charter on this day. 24th October is celebrated as the United Nations Day every year. The UN started with 50 members. Today 193 countries are the members of UN. Now, so the peace-loving country, they got together and they formed an international organization. It is known as a UNO, United Nation Organization. So on 24 October 1945, on 24 October 1945 in San Francisco, 24 October 1945 in San Francisco, this International United Nation was established. Where? In San Francisco. It is the name of a place. In San Francisco, 24 October 1945, this international organization was established. And on that time, only 50 members, only 50 countries are the member of this international organization, and India is also one of them. In these 50 countries, India is also one of them. But slowly, now in the present time, total 193 countries are the members of this United Nations. And now, so because on 24 October 1945, United Nations was established. So we celebrate these days. When we celebrate every year, we celebrate 24 October. We celebrate as a United Nation Day. We celebrate every year on 24 October. Every year we celebrate this day as a United Nation Day. Why? Because on 24 October 1945, this international organization was established in San Francisco. So every year we celebrate 24 October. This day we celebrate every year as a International United Nation Day. 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड
नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और इसकी स्थापना कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पे हुई। जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय 50 देश जो थे, 50 देश जो थे वही इसके मेंबर्स थे, जिसमें से भारत भी एक था। उन 50 देशों में से भारत भी एक था। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में इसके 193 मेंबर्स हैं। जिस टाइम ये बना उस टाइम खाली 50 मेंबर्स थे, लेकिन आज इसके क्या हैं? आज इसके टोटल 193 मेंबर्स हैं। और इसकी स्थापना क्योंकि 24 अक्टूबर को हुई थी, इसीलिए हर साल हम लोग एवरी ईयर हर साल हम लोग 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मीन्स इन every year 24 October is celebrated as a United Nation Day. Why? Because on this day the international organization means United Nation organization was established in San Francisco. So we will celebrate this day as a United Nation Day. इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। The objective of the United Nations. The main objectives of the United Nations are to maintain peace and security in the world, to peacefully solve the disputes between members and countries, to develop friendly relations between nations, to cooperate with each other in solving economic, social and human problems, to respect human rights and freedom of all the nations. Now, there are some main purpose of this United Nations. When this organization is established, so it's some main purpose of this organization also. There are some main purpose. According to this purpose, this organization was established. Now, firstly, its purpose is to maintain peace and security in all over the world. To keep peace and security in all over the world. Except these, some other purposes. To solve the problems between the members country. To solve the problems between the member country. Peacefully we can solve the problem. If any member country suffer from any kind of problem, so we can solve this problem peacefully. This is the main aim, this is the main purpose of this organization. And they also develop friendly relation. They also develop the friendly relation between the nation. They also maintain the friendly relation between the member countries. Except these, they also promoting social progress, better living standard and human right. So these are the main purpose ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना करने का कुछ पर्पस था, उनका कुछ एम था। एम पर्पस उनका क्या था? यही था कि हर जगह शांति बनाई जाए, सुरक्षा बना के रखी जाए। जो भी मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, उन देशों में शांति बनाई रखी जाए, सुरक्षा बनाई जाए। उन मेंबर देशों में के बीच में यदि कोई प्रॉब्लम है उनके बीच में, तो उन प्रॉब्लम को पीसफुली हैंडल किया जाए, पीसफुल ढंग से उसे। अगर किसी भी देश को किसी दूसरे देश से कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो पीसफुली ढंग से किया जाए। अगर पीसफुली ढंग से किए रहेंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन हल हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और अगर पीसफुल ढंग से नहीं करेंगे तो एक ही उसका परिणाम होगा युद्ध। युद्ध द्वारा तो कोई भी सॉल्यूशन का हल नहीं होता। तो अगर किसी भी देश की किसी दूसरे देश के संग किसी तरह की प्रॉब्लम है उनको, तो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो पीसफुल तरीके से किया जाए। सभी जो मेंबर देश हैं उनकी जो रिलेशन हो, दोस्ताना उनके संबंध हो, फ्रेंडली रिलेशन उनके बीच में कायम की जाए। इसके अलावा जो है प्रमोट किया जाए सोशल प्रोग्रेस को, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड को, ह्यूमन राइट्स को। तो ये कुछ जो है पर्पस या एम थे इस ऑर्गेनाइजेशन। मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएनए वर्क्स थ्रू इट्स 6 मेन ऑर्गन्स। दे आर जनरली असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, ट्रस्टशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ देयर आर 6 मेन ऑर्गन्स, there are 6 main organs, there are 6 main parts
of the United Nations. यूनाइटेड नेशंस के 6 हिस्से बनाए गए, 6 पार्ट बनाए गए और इनके द्वारा ही इसमें वर्क किया जाने लगा. फर्स्ट इज द जनरल असेंबली. द जनरल असेंबली इज द मेन ऑर्गन ऑफ द UN. It is composed of all the member nations. Its members meet annually at a UN headquarters in New York City. It functions like a parliament. All the matters related to the world peace are discussed here. Each member country has one vote. The General Assembly appoints the UN Secretary General on recommendations of Security Council. Now, first is the General Assembly. General Assembly is also the main organ, main part of the United Nations. In General Assembly, in this assembly, members discuss, debate on subjects related to international peace and security, including development, human rights, and international law. The peoples who are the members of this General Assembly, they meet annually. Means in a 1 year they meet annually. They can meet annually in the UNA headquarters. UNA headquarters is situated in New York City. The headquarters of the United Nations organization is situated in New York City. And in this city, the members meet annually and they discuss, they debate on subjects related to international peace and security, including development, human rights, and international law. The General Assembly, the Secretary General, the General Assembly appoint the United Nations Secretary General. The Secretary General of General Assembly is appointed by the United Nations Organization. जनरल असेंबली क्या थी? जनरल असेंबली इसका एक हिस्सा है, मेन पार्ट है. इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, इसके जो भी मेंबर्स हैं साल में एक बार उन लोगों की मीटिंग होती है. और इनका काम क्या होता है? ये लोग कहाँ पे मिलते हैं? जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पर ये लोग मिलते हैं. और इस असेंबली में क्या होता है? इस असेंबली में डिस्कस किया जाता है, डिबेट्स किया जाता है उन सारे सब्जेक्ट से जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे पीस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर. इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होता है. उसके बारे में बातचीत की जाती है. नाउ नेक्स्ट इज सिक्योरिटी काउंसिल. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. Now, second part is the Security Council. Security Council has a primary responsibility under the United Nations for the maintenance of international peace and security. This is the work of a Security Council. And in Security Council, total there are 15 members. 15 members, 5 are permanent members and 10 are non-permanent members. Permanent members are USA, France, China, UK, Russia. These are the 5 permanent members of the Security Council. Security Council का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की व्यवस्था करना. इसके जो मेंबर्स होते हैं 15 होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं. जो इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं आपके USA, फ्रांस, चाइना, UK और रशिया. नाउ नेक्स्ट इज सेक्रेटेरिएट. द head of the secretariat is the Secretary General. The secretariat is responsible for the day-to-day activities of the UN. Now the Secretary General of the United Nations, is Antonio Guterres. He is the Secretary General of the United Nations. You know, the Secretariat carries out of the substantive and administrative work of the United Nations as directed by the General Assembly. Is the General Secretary who provides over all administrative guidance. And the work of this Secretary General is they are responsible for the day-to-day activities of the UN. सेक्रेटेरिएट इसके जो हेड होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल होते हैं. और सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं कौन है इस समय?
में प्रेजेंट टाइम में जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो ग्यूटेरियस। और इनका काम क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन में जो भी एक्टिविटीज़ डे टू डे होती हैं उनकी जो भी डे टू डे वहाँ पे जो भी वर्क होता है या जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में जानकारी रखना। Now, International Court of Justice. The headquarters of the International Court of Justice is at Hague in the Netherlands. It has 15 judges. They are appointed for 9 years. It settles dispute between nations in a peaceful manner. It advises the members on international law. Now, International Court of Justice. The headquarters of the International Court of Justice is situated in Hague. Hague, it is situated in the Netherlands, and in this court, in this international court, total 15 judges, and all are appointed for the 9 years only. And its work, they give advice and opinion on legal questions. They give advice, opinion on the legal questions. This is